Hello students, welcome to today's class, and in today's class we are going to discuss about the chapter which is chemical reactions and equations, and in this chapter we are going to talk about physical and chemical change, the types, sorry. Hello students, so in this class we are going to talk about the topic chemical equations and balancing, which is a part of your first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. Now, before jumping directly into the chemical reactions and equations, we are going to talk about change, right? So if you are, observing around your environment, so there are many changes happening, right? कैसे changes हो सकते हैं? Let's suppose that मैंने पेपर फाड़ दिया, that is also a change. Suppose मैंने मैचस्टिक को जलाया, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. और आई कैन से दैट कि तुमने अपने लंच बॉक्स को स्कूल से लेकर आए बट मम्मा को देना भूल गए, और अगले दिन जब तुम उस लंच बॉक्स को खोले तो बहुत अजीब सी स्मेल आई, वो भी एक चेंज है. ये सॉरी. सो पहले हम इस चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, इट्स इक्वेशंस एंड अदर थिंग्स, राइट? सो So if I'm talking about the change, how can we define a change? See, so first of all, I can say that a change means when a substance or object becomes different from what it was before. Yes or no? तुम्हारे को जब मदर ने लंच बना के दिया था तो वो काफी अच्छा स्मेल कर रहा था, रोटी थी, चावल था, वॉट एवर इट वॉज. बट जब तुमने उसको बंद करके रख दिया और जब तुमने एक दिन दो दिन बाद खोला तो क्या वो स्मेल सेम था? नहीं, इट वॉज डिफरेंट. अब क्या वो जो फूड मटेरियल था वो वैसे ही टेस्ट करेगा? नहीं, इट विल टेस्ट डिफरेंट. यस और नो? यस. सो चेंज हो सकता है किस किस में, या तो किसी चीज का शेप चेंज कर दो तुम, या तो चेंज द साइज, स्टेट और इट्स कॉम्पोजिशन. जैसे अगर हमने जो फूड मटेरियल का एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या चेंज हुआ? Composition was changed. Yes or no? Okay. Now, if I'm talking about this water, है ना? So I can say that sir, water का जो chemical formula होता है वो H2O होता है, and इसके तीन states होते हैं, solid, liquid and gas. Yes, ये भी change हुआ ना. मैंने क्या किया, water को लिया, फ्रिज में डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में. अब मैंने वाटर को इवेपोरेट कर दिया, बॉईल कर दिया, so it changed into gas. So again, change is happening. Yes or no? Now see, क्या हम सारे चेंज को एक कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या हमें चेंज ऑफ वाटर, जो वाटर चेंज हो रहा है और जो फूड मटेरियल हमारा स्पॉइल हो रहा था, उन दोनों को हम सेम कैटेगरी में रख सकते हैं क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट. देखो, वाटर की चेंज की बात करूं मैं, तो आइस का भी फॉर्मूला क्या है? H2O. लिक्विड का भी फॉर्मूला क्या है? H2O. गैस का भी फॉर्मूला क्या है? H2O. सो सर यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ. ऐसा नहीं हो रहा कि कोई बहुत नया ऑब्जेक्ट बन गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि H2O से हमने MgO बना दिया. नो, H2O इज H2O ओनली, राइट? बट जब हम फूड स्पॉइलेज की बात करते हैं, तो मेरे पास स्टार्च था. तुमने अगर रोटी बना रखी थी, लंच में रोटी रखा था, चपाती रखा था, तो वो स्टार्च था. अब वो स्टार्च जो है वो शुगर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया. दैट मीन्स बैक्टीरिया ने उनको खाना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो टोटली अलग सा प्रोडक्ट बन गया. यस और नो? सो इस बेसिस पे हम चेंज को क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स, राइट? So one is the physical change and the other one is the chemical change. Okay? सब देखो, फिजिकल चेंज क्या हो सकता है सर? मान लो मैं नया हेयर कट करा के आ गया तुम्हारे सामने, या मान लो मैंने अपने पूरे सर के बाल हटाए, बट स्टिल आई विल बी हर्ष सर ओनली, राइट? आई वोंट बी चेंज्ड. या सपोज तुमने अगर पियर्सिंग करा ली, स्टिल यू विल बी द सेम पर्सन, करेक्ट? सो फिजिकल चेंज इज व्हाट? फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना.
दैट्स द फिजिकल चेंज। कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। और यूजुअली क्या होता है, ये रिवर्सिबल। सपोज मैंने बाल हटवा लिया तो कुछ दिनों बाद मेरे हेयर्स जो है वो वापस ग्रो हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग ऑफ पेपर, एंड डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। Now, how does dissolving salt in water is a physical change, sir? सॉल्ट तो चला गया, बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जिस ग्लास में तुमने सॉल्ट को डिसॉल्व, तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। एंड जब हम बॉईल करेंगे तो भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस में कन्वर्ट होंगे। अब जो ग्लास में हमारे पास बचेगा कौन? सॉल्ट। सो देखो, मैं सॉल्ट वापस ला तो सकता हूँ, तो इट इज वन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। करेक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन पता नहीं क्या होता है? इफ यू डोंट नो, आई एम रिपीटिंग। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम वापस चेंज कर सके। सपोज मैंने ए से बी बनाया, तो मैं वापस बी से ए बना सकता हूं। जस्ट लाइक दिस। हमने क्या किया यहाँ पे? सॉलिड से लिक्विड बनाया था, तो लिक्विड से सॉलिड भी हम बना सकते हैं। ओके, चलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप, which is the chemical change. Correct. If I'm talking about the chemical change here, so see, the main thing is that a new substance will be formed, right? So the composition changes and a new substance is formed, and that's when we call that a substance is undergoing a chemical change, right? Now this is usually irreversible. हम इसे change नहीं कर सकते. We can't change it. For example, मान लो तुमने क्या किया, तुमने गुस्से में आके अपने टेस्ट पेपर्स जला दिए, लेट्स सपोज। अब मम्मी तुमसे टेस्ट पेपर्स मांग रही है वापस, कहाँ है बताओ, पीटूंगी नहीं तुम। तो तुम क्या वो जले हुए टेस्ट पेपर्स को वापस मम्मी के पास ला सकते हो? नहीं ला सकते, राइट? क्योंकि तुमने क्या किया, जनरली पेपर्स जो है वो किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, है ना? तुमने क्या किया, उस कार्बन को तो जला के उसको CO2 और एशेस में कन्वर्ट कर दिया। अब तो तुम एशेस से वापस पेपर नहीं बना सकते। बट अगर तुम टेस्ट पेपर्स को फाड़ के रखते तो शायद तुम सेलो टेप से, फेविक्विक से लगा के वापस से उसको एक पेपर के फॉर्म में ला सकते थे। तो वो हमारा क्या था? फिजिकल चेंज। बट ये हमारा क्या हो गया? केमिकल चेंज। करेक्ट। ओके, now don't do this whenever you are getting your test papers. If you are getting bad marks, follow us, we are here for you, so that तुम्हें टेस्ट पेपर्स फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ओके, नाउ कम हियर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स। बर्निंग ऑफ वुड, ऐश और गैसेस में कन्वर्ट हो जाता। देखो, एक हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट मैं एक चीज बताता हूँ। हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जलाते हैं तो जनरली हमें क्या मिलता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एशेस मिलते हैं, राइट? अगर तुमने देखा होगा, जब हम फ्यूनरल भी करते हैं तो हमें एशेस मिलते हैं। सो जनरली जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्न करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन से बना होता है, हमारे बॉडी में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, हम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट? तो जनरली एशेस और गैसेस निकलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हाट इज दिस रस्टिंग ऑफ आयरन? तुमने देखा होगा, अगर अभी हमारे पास गर्मी के टाइम पे जनरली वी हैव कूलर्स, राइट? वो बड़े बड़े कूलर्स होते हैं, मेटल वाले, जो हम खिड़की के बाहर ऐसे विंडोज के बाहर लगा देते हैं, राइट? एंड उसमें रस्ट हो जाता है। धीरे धीरे उनकी कुछ लेयर्स जो है उतरने लगती है। दैट इज रस्ट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, हमारे ये पूरा अलग से टॉपिक है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग इट in very much detail here. I'm just talking about what is resting. ठीक है? आयरन की फर्स्ट आयरन है। सपोज दिस इज द आयरन ऑब्जेक्ट, एंड इस आयरन के ऑब्जेक्ट में के अगल बगल के मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स वाटर, और साथ में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो जो आयरन है वो इस मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और अपना ऑक्साइड बना लेगा, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट? नाउ डाइजेशन ऑफ फूड।
Now tell me, digestion of food, how is it a chemical change? सोचो एक बार. देखो, तुम जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ना, स्टार्च, राइट? सो देखो, अभी हम प्रोटीन का एग्जांपल लेते हैं. तुम प्रोटीन खाते हो, किस किस में प्रोटीन होता है फटाफट से बताओ मुझे. सोचो एक बार. हमारे पास प्रोटीन होता है फिशेस में, मीट, पल्सेस, चिकन, ये सारी चीजों में प्रोटीन होता है. अब देखो, जैसे हमारा घर बना होता है ब्रिक्स से, छोटे छोटे ईंटों से बना होता है, वैसे ही प्रोटीन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही बने होते हैं. सो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं तुम्हें पता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स, राइट? बहुत सारे अमीनो एसिड्स आते हैं और एक प्रोटीन बनाता है. ओके. सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एंड अमीनो एसिड जो सिंपलर सब्सटेंस है, छोटा सब्सटेंस है. तो जब तुमने प्रोटीन खाया तो हमारी बॉडी ने क्या किया? उस प्रोटीन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया? एमिनो एसिड्स में. अब ये एमिनो एसिड जो है हमारे सेल्स में जाएंगे और जो भी इनको काम करना होगा वो करेंगे. तो हुआ ना केमिकल चेंज. हमने प्रोटीन से एमिनो एसिड्स बना लिया, राइट? इसी तरह से अगर तुम स्टार्च खाओगे तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वो शुगर से बने होते हैं, तो स्टार्च जो है वो छोटे 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 शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? ओके, चलो. Now, this was all about the physical and the chemical change. Now, we are going to talk about the equations. Okay? And उससे पहले I have questions for you. Let's solve these questions. Okay? फटाफट से. See, milk is left at a room temperature during summers. हम generally, हमें मम्मी बोलती है ना, फ्रिज में रख देना दूध सोने से पहले. अगर मान लो जैसे मेरे घर में क्या होता है, मैं कभी रात लेट तक काम कर रहा हूँ या लेट तक पढ़ता था, तो माई मदर यूज टू से दैट बिना फ्रिज में दूध रखे हुए सोना नहीं, पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी. क्यों? क्योंकि मम्मी को पता रहता था कि अगर उसको रूम टेम्परेचर पे समर के सीजन पे रख दें तो क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है मिल्क में वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा, तो मिल्क के प्रोटीन को खाएगा, डाइजेस्ट कर देगा, और हमारे लिए वो मिल्क कंज्यूम करने लायक नहीं रहेगा. सो दैट वाज अ केमिकल चेंज. करेक्ट. नाउ व्हाट? एन आयरन तवा pan nail is left exposed to humid atmosphere. This तो भी discussed chemical change ही होगा, right? Now let's talk about the grapes. Grapes gets fermented. Grapes means अंगूर. सो जनरली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि ब्रूइंग इंडस्ट्रीज जो अल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या करती हैं? ग्रेप्स को लाती हैं, उसमें शुगर्स डालती हैं और उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती है. अब इसमें क्या मिलता है यहाँ पे? जब ग्रेप्स में क्या है बताओ? कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल एंड CO2 गैस. सो इस अल्कोहल को फिर प्यूरिफाई करके मार्केट में बेचा जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट इट इज you're getting from a natural source like grapes and also it might be good for health. No, it's not at all good for health. Now, food is cooked, obviously chemical change. बिल्कुल चेंज होता है ना. तुमको मैं बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ. हम फ्लोर लेते हैं, आटा लेते हैं. जब आटे में हम पानी मिलाते हैं तो एक चिपचिपी सब्सटेंस आ जाती है, राइट? ओके, ये भी एक केमिकल चेंज है. अब तुम आटे को, जो तुमने आटा को गूंद लिया है, विच इज द डो इज रेडी. इफ आई आस्क यू दैट नहीं, इसको वापस से पाउडर में चेंज करो, कैन यू डू दैट? नो, यू कांट, राइट? बिकॉज इट इज रिएक्शन हो चुका, हमने पानी डाला, रिएक्शन हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता. Food digestion is also chemical change. We discuss respiration is also a chemical change. याद रखना, breathing and respiration are two different things. We will discuss it in biology chapters. Respiration is what? Respiration is basically whatever things we are eating. उस, जैसे प्रोटीन को हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट को खाया, तो उसको तोड़ के हमें जो एनर्जी मिल रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में. ना, let's have one activity. So this is one activity here you might have done in your schools in the laboratories. Now see, what we can do here is that we have this ribbon, magnesium ribbon, which is generally of grayish color. So I am not using gray color because the slide is only white, so you won't be able to see. So assume that this red color is a gray color, okay? And this is magnesium ribbon. So magnesium ribbon will be made up of magnesium only, right? Now what I'll do is that I'll burn it. Okay,
just like this. See, the person is holding the magnesium ribbon with the like scissor-like structure, which is known as tongs. Now, why we are holding it with that? Because obviously, if you will take it directly, it might burn your hand. Now, once it starts burning, what you will see is that a dazzling, like white light, bright white flame. Dazzling means what? It is just, like this, very bright. And then you can see some of the powderish substance is getting collected here, right? Correct. Now see what you have done. एक रिबन था, सॉलिड स्ट्रक्चर था, है ना? उस सॉलिड स्ट्रक्चर को तुमने जलाया एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. स्टेट भी तो चेंज हो गया थोड़ा बहुत, मतलब टेक्सचर तो चेंज हो गया. यस और नो? तो ये मैं बोल सकता हूँ केमिकल रिएक्शन है. डेफिनेटली सर, यहाँ पे दो चीजें इंडिकेट कर रही हैं दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. एक क्या? एनर्जी निकलना, लाइट इज बेसिकली एनर्जी, एंड दूसरा conversion of Mg into a new substance which is magnesium oxide. Correct? Okay. Now, we generally talk about the safety measures here. हमें जैसे if you're burning it, so you just don't look it very closely because it might hurt your eyes and all. And one more thing, a question arises here from this activity, that why do we rub magnesium ribbon? Why do we rub magnesium ribbon with sandpaper? With sandpaper before burning. Okay. So you are going to have the comment section, right? And in the comment section, if you're watching this video, write this answer. Okay. And I'll check whether you have written it correct or not. Okay. Now see, suppose you have done this activity and now I want you to explain the reaction of this activity. So what you will do? You will, tell me the whole thing. Sir, I have taken magnesium ribbon and then I have heated it and then oxide has formed, powdery substances formed, this, that. So it's a very hectic process, right? Although this reaction is very small, but what if I ask you to explain 10 reaction? So it will be very hectic, not like giving each and every steps, telling each and every detail, writing each and every detail. So it's really very hectic. So what scientists did is that, like, let's not make this thing very, complex. If we want to write the reactions, let's use symbols. Let's use uh, like elemental symbols. If suppose magnesium is there, so I'll write Mg, right? So this will make our life easy. So here, this reaction can be written as what? It can be written as like this: magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. But sir, again, this is very tedious process, right? I am writing MAGNESIUM. It will take time. So this equation is known as what? It is known as word equation because we have used the words, correct? So instead of words, we can use symbols. So if we are using symbols, that reaction will be what? Symbolic reaction. Is there a thing called symbolic reaction? No, we won't call it a symbolic reaction. We will call it as a proper, chemical reactions. Okay. Now, see, I'm giving you extra point here, a very extra point. If you are going to watch this video, I promise that you won't require to learn any chemical reactions. I'll teach you the secrets of that. See, you have magnesium, okay? Now, what is the atomic number for magnesium? It is 12. Now, if you don't know the atomic number, please learn it. It's very important. If the magnesium's atomic number is 12, and if I ask you to write the electronic configuration, so you will write it 282 is on 2, 8, which is 10, and plus 2. Now see, if I ask you that magnesium has to become stable. Now, what does the stable means? Stable means that it has to complete their octet. Yes or no? So it will lose this 2 electron and it will become 2 comma 8. And since it is losing 2 electron, it will get a positive charge of 2. Yes or no? Now what about oxygen? See, oxygen also, it has 2
comma 6 electronic configuration, which is 8 atomic number. So, sir, oxygen needs 2 electron to become stable, yes or no? Yes. So, the magnesium, the electron which was, like left by magnesium is going to be accepted by oxygen, and oxygen will complete their octet and it will become O minus 2 because 2 electron extra is coming. So that's the reason why MgO is formed. See, very easy. Mg plus 2 and O minus 2. So plus 2 and minus 2 are getting cancelled, and that's the reason why MgO is formed, not Mg2O or Mg3O, something like that. Okay, so if you are having confusion like ये 2 कहाँ से आता है, 3 कहाँ से आता है, just do this process. Okay, now we are done with these reactions. So we have written about the word equations, we talked about these things, but actually what are these things? So these symbols and all are known as chemical equations. So whatever you did in the activity, we are representing it in the form of equations. So how you're going to represent it in the form of equations, or what is an equation, we're going to discuss it in a very detailed manner. So let's recall what you have done. We have taken Mg and we have taken oxygen, right? And then we have made MgO. So right now I'm just able to figure it out. Okay, this is magnesium, this is oxygen, and this is something, like MgO, magnesium oxide. Now, if we are not going to, understand this chemical equations properly, then it's not worth it writing it, right? So we have to know how to read the chemical equations and all. So see, this part is what? This part is your left hand side. Suppose you are standing like here on the arrow and facing forward. So this is your left hand side and this is your right hand side. So this left hand side contains what? It contains reactants. Now what are reactants? The ones which you have added. You wanted to react magnesium with oxygen, and the thing which you got is the product. So can I say that left hand sides are the reactant and right hand sides are the product? Okay. Now see, here we got two reactants. So I wrote it like I added the reactant with the plus sign so that we can figure it out that this magnesium and oxygen is a different reactant. Okay. Now we do this thing arrow, we represent it with arrow. Now what is arrow? It is showing that the reactant is getting converted into the product. Okay. Now, how we can write a chemical equation? See, so chemical equations can be written in a shorter form using chemical symbols or formula instead of words that we discussed. So a chemical equations represents a chemical reactions, definitely. Equations को हम क्यों use कर रहे हैं? Because whatever you did in that activity, you want to represent it. Now, this was the word equation and this is the chemical equations. Now, see, when we compare the number of atoms on both the sides, so see how much number of atoms of magnesium is there. So, sir, Mg is 1 here, yes or no? And if I'm talking about the oxygen, so oxygen is also 1 here, correct? Is it so? No, oxygen is 2, right? So let me write 2 here. But in product side, magnesium is the 1, but oxygen is not 1, sir. It is, sorry, oxygen is 1, it's not 2. It should be 2, right? To be, like equal, but it's not. So such type of reactions where your elements are not equal in number, or the when atoms are not equal in the number, such type of equations are known as unbalanced equation. And such unbalanced equation is called as the skeletal chemical equation. So whatever the reaction which we have written here, it is basically what? It's basically the skeletal equation for burning of magnesium in air. So in the next topic, in the next video, we are going to talk about how we can balance the chemical equations. And if you have problem in balancing the chemical equations, I assure you that watching that video, you will, like after watching that video, you won't have any problem in balancing an equation.
So that's all for today's session, and I hope that you all understood the topic very well. Now you have to keep practicing, keep solving the questions, and I'll see you next time. And if you have any doubts, even a smallest doubt, if you have, don't hesitate to ping me, don't hesitate to contact me through my Urban Pro profile. Okay.